Welcome to Booster Test Series of Sakar. Today we are explain the CT3 topic Morphology of Flowering Plant and Anatomy of Flowering Plant. The first question, placentation is the arrangement of ovule within an ovary. This figure of the two types of placentation is given below. And statement आपको जो निकालना है वो है true or false. Description correctly. First is a marginal placentation, another is parietal. So L is marginal placentation, ovule attached with the ridge made up of the placenta and margin of the ovary, while M placentation of the ovule peripheral to the ovary. So this is the correct one. And L, placentation seen in unilocular ovary, it's a wrong because it's a basal. L is characteristic property of a family Cruciferae, wrong. Cruciferae having different placentation. Another L, placentation ovule attached to the multilocular ovary, again it's not wrong, it's a wrong. Single ovule is not present in this, so it is also wrong. So correct explanation is first. Question number 2, a student observe a flower specimen and write their vegetative and floral character. Character is given, leaf alternate, simple, extricated, reticulated venation. Flower is bisexual, actinomorphic. Pentamerous, calyx 5 but united. Corolla is also united. Volvate distribution. Androecium is 5. Epipetalous. So correct description in the form of floral formula. Actinomorphic, so we use the symbol actinomorphic as well as bisexual. Calyx is 5 and united. Corolla is also 5 and united. Androecium 5. Epipetalous condition is given by the curved line, and gynoecium is superior ovary with bilocular condition. So correct option is only 2. In first option, bracket is not given, so it does not indicate the gamocephalous condition. Same case in 3 and 4. So which of the following is the smallest region of the root? As you know, smallest region of the root is nothing but meristematic activity or meristematic zone, because this is only area where the cell division takes place and it is the smallest part of the root. Now, again the question is match the following, and basal, axial, parietal and precentral placentation. When you go for the matching, basal placentation is easily you can connect with the sunflower. So correct option 4, basal is 4, axial is China rose, then parietal present in a mustard and precentral in a dianthus. So correct option is third. Is the swollen leaf base and observed in some leguminous plant? Swollen leaf base is given as a pulvinous and it is present in a leguminous plant. So correct option is third. Now, identify the type of venation. It is easiest question. You can easily observe that network-like condition present in A, which is a characteristic feature of dicot, and parallel venation can observe in monocot because these are parallel veins to midrib. If X leaf have incision lamina and incision is do not touch it the midrib, that is a clue. Do not touch the midrib. That means leaf X is nothing but simple leaf. So correct option is simple. Rest of the option is related with the complex, so compound leaf, so it is not correct. Incisions midrib ko touch nahi kar rahe hain, that means simple. Now, the leaf has completely divided lamina with distinct segment and leaflets is known as. Leaflets is the characteristic feature of compound leaf because leaf lamina is divided into the small parts, so that small parts is called leaflet. So correct answer is compound leaf. Now go on. Another question from your NCERT directly given. These three diagrams represent especially alternate, opposite and Worley phyllotaxy. So correct option is this one. A has same type of phyllotaxy observed in sunflower because sunflower having a which type of phyllotaxy? Alternate. That's why correct option is 4 only. Select the incorrect statement with respect to racemose inflorescences. As you know, racemose inflorescence. Man axis continues to grow. This is a correct option. They are asking about incorrect. Peduncle bears flower in basipetal. This is wrong because in your text it is given as a acropetal order. The man axis not terminates. Again correct. It is indeterminate type. Yes, because growth is continue. So except 2, all are correct. So your correct key is second one.
Identify the inflorescence shown in the figure and select the correct option about A and B. So A is given in text as a racemose and B is cymose. It's a directly textual question, diagram based. X is the swollen end of the pedicel on which the different kind of floral whorls are arranged. So swollen tip of the pedicel is considered to be a thalamus. Another name given in NCERT, it is receptacle. So that's why correct option is thalamus. Peduncle is axis, so not correct. Keel is fuse condition observed in maxillary, and stalk is totally different option. So 1 or 2 correct key is second. First, which of the following statement correct for perianth? For perianth, calyx and corolla is not distinguished because perianth is the characteristic feature of a monocot family, and monocot family do not having calyx and corolla distinct. There is a common cover which is called perianth. So for 1 and 3, 1 is the correct option. On the basis of relative position of the different floral parts of the thalamus, a flower can be hypogynous, peri and epigynous. With respect to given figure A, B, C, D, select the correct option. So as again the diagram from NCERT, first one is position of gynoecium is superior, so it is hypogynous. In both the condition B and C, it is a rim of thalamus. That's why they both are represent हॅलो the बच्चो, perigynous तर तुम्ही condition. म्हटलं होतं की When सर ovary आम्हाला is सीईटीचे पण enclosed अनालिसिस within पाहिजे. a तर तुमच्यासाठी सीटी चा पॉवर thalamus, then 14 it is होणार epigynous आणि condition. 14 So correct माइनस option का is भी first, करेंगे जे का भी hypo, करेंगे. peri, तर peri and इका भी epigynous. जैसे जैसे पेपर बढ़ेंगे तो If in brinjal, डिफिकल्टी the लेवल आपकी gynoecium बढ़ती occupy the जाएगी. तो highest आपको पहले position. टाइम मैनेजमेंट के Again, लिए the same 1 2 type of 3 question. When जैसे 1 2 gynoecium is सिटीज superior को and यूज occupy करना the है. highest बाद position, में टाइम so you can मैनेजमेंट हो directly गया solve तो it is आपको क्वेश्चन पे hypogynous फोकस. condition. Okay. Another question, arrange the correct order according to the given figure. In a first, it is volvate, twisted, imbricate and maxillary estivation. When you observe that non-overlapping margin, so first one is volvate, overlapping margin, twisted, and overlapping margin and not in definite direction, it is called imbricate. When maxillary estivation, large petal is standard, wings and keel. So correct option is your 4. Complete the paragraph in given below and replacing the A and B in correct term. Androecium is composed of. So again, it's an easy question. Androecium is composed of. So correct option is stamen. And while represent the male reproductive organ, it consists of stalk. B. So stalk is considered to be a anther. So which is usually bilobed. So it is an anther. So correct option is stamen and anther. Rest of the option is irrelevant. You can easily remove these options. Now select the incorrect match pair of the following. Monoadelphous condition, stamen. As monoadelphous condition of stamen you observe in a hibiscus or maybe in a China rose. Second, diadelphous cucurbita, not correct. Polyadelphous citrus, correct. Epiphyllus lily, correct. So in your textbook paragraph, diadelphous condition not present in cucurbita. So incorrect pair is your second. Identify the again incorrect match of the following. Now, when a statement is there, stamen attached to the petals, no doubt, epipetalous, perianth, episepalous. It's a wrong option. Free stamen, polyandrous, sterile, staminode. So this is your incorrect statement, stamen attached to the perianth. So this is wrong term. It is epiphyllous. So your correct option is second. When a carpel are free, they are called A and in lotus and rose. Statement from your textbook, when carpel are fused, they are called dash B. So free carpels is considered to be apocarpus and fuse is considered to be syncarpus. So it's a question and A and B represent apo and syncarpus condition. Which of the following statement correctly define the placentation? Again, directly definition from your text. So your correct answer, you can easily find out the arrangement of ovule within a ovary is correct option. Synergids नहीं होता है आपका correct. Carpel again wrong and pistil is also wrong. Axial placentation found in a syncarpus ovaries. In this placentation, the ovule arrange along with. Axial placentation is considered to be axis of your septa. So correct option is third. In given below statement, label, assertion and reason. A flower is defined as modified shoot when the shoot apical meristem changes to floral meristem. Correct option is reason.
internode of the shoot get condensed to produce different floral appendages literally at a successive node instant of leaves. बेटा ये रीजन रॉन्ग है क्योंकि वहां पे लिखा है internode of the shoot get condensed. No, it's not internode, it's a node are condensed. So your A is true while R is false. Now next, the fruit is the characteristic feature of dash. As you know, fruits are present only in one group of the plant kingdom, that is angiosperm, and the formation of fruit from ovary without fertilization. This is again terminology. This is called parthenocarpic fruit. So your correct option is flowering plant or maybe angiosperm, and this is called parthenocarpy. Now choose the incorrect match from the following. Parthenocarpic fruits are seedless. Yes, correct hai, because parthenocarpic fruit is seedless because they are developed from without fertilization. Wall of the fruit is called epicarp. It's a wrong because correct option is pericarp. So when they are asked the incorrect, so this is incorrect. Middle wall of the fruit, meso, correct hai. Dry or fleshy part of the fruit is pericarp. Again correct. So incorrect is second one. Thick and fleshy pericarp is differentiated into. When pericarp is thick and fleshy, as given in your text, this is nothing but drupe. In drupe root, this is divided into three different layers, that is epi, meso and endocarp respectively. So thick and fleshy pericarp, second is the correct option. Identify the A, B, C. This is a diagram given in your textbook. This is nothing but embryo axis of a dicot seed. So A is nothing but cotyledons, B is libule and C is radicle. So your correct option is third. Choose the incorrect pair. Seed contains an embryo. Correct है क्योंकि हम सीधा बोलते हैं सीड के अंदर एक प्लांट छुपा हुआ होता है, तो डेफिनेटली सीड के अंदर जो प्लांट छुपा हुआ है दैट इज एम्ब्रियो. मोनोकोटिलेडन सीड वीट करेक्ट है. डाइकॉट मेज ये इनकरेक्ट है. सीड कोड आउटर कवर है, करेक्ट है बिकॉज डाइकॉट सीड इज नॉट मेज, मेज इज मोनोकॉट. सो व्हेन दे आर इनकरेक्ट योर ऑप्शन इज थर्ड. When both the essential floral whorls, stamen and carpel, are present in a flower, it is written as and the floral formula, and also find out the correct symbol for the bicarpellary syncarpus inferior ovary. So this is the symbol used for a bisexual condition and inferior ovary. Gynoecium के ऊपर bar line आएगा and bicarpellary 2 in the brackets. So correct option is first one. Now, which of the following statement are correct with respect to given floral diagram? This floral diagram given in semi-technical description of your family. So this flower is actinomorphic and having 4 fused sepals, right? Now, next option is it is not correct क्योंकि यहाँ पे आपको ये जो आपके sepals हैं वो fuse नहीं दिख रहे हैं, different है. In androecium consist of the 6 stamen and 2 whorls, 2 and 4. So it's a correct 2 and 4. Second correct दिख रहा है. Third, the ovary is superior and apocarpus condition. No, 2 locule आपको ovary में दिखाई दे रहे हैं. So it's not a apocarpus ovary. And the floral formula represent potato. Again wrong. Potato is not belong to Brassicaceae. Potato belong to family Solanaceae. So your only second option is correct in given floral diagram. Study the carefully given floral diagram and select the option which correctly represent the related floral formula. So it's an easy question to you. This is a floral formula of family Solanaceae. So actinomorphic bisexual flower because androecium and gynoecium both are given. Calyx is 5 which are fused. Corolla is also 5 again fused. Androecium is 5 and connect with the corolla. So it's a epipetalous condition. Gynoecium G2 superior ovary. So the correct option is second. Now, from the option given below, find out the correct floral formula of a flower having following character, namely actinomorphic, then bisexual, 5 united sepals, 5 united petals, stamen 5 and epipetalous, bicarpellary syncarpus superior ovary. So friends, this is again a floral formula of family Solanaceae. So your correct option is second one. एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्चुअल. जैसे आपको वर्ड दिए हुए हैं सेम सिंबल हमने यूज करना है. आपको बोल रहे हैं वो यूनाइटेड 5 सेपल्स, सो इट्स अ ब्रैकेट, corolla 5, united, stamen 5 and they are epipetalous, so curve line.
bicarpillary, G2, syncarpus, fuse, and superior ovary. So varline is below the gynoecium. So correct option is second. Now, assertion reason. In some leguminous plant, the leaf base is swollen. Correct है आपका assertion? And the swollen leaf is called pulbinous. It help in movement. Both are correct and also a correct explanation. Both the statement is correct and this is also a correct explanation. The swollen leaf base help in the movement of this leaf. So it's a second option. Leaf of both the monocot and dicot plant is generally possess parallel venation. रॉन्ग है, दोनों में पैरेलल वेनेशन नहीं होता है क्योंकि आपका अगर डाइकॉट होगा तो आपको रेटिकुलेट मिलेगा और मोनोकॉट है तो ही पैरेलल मिलेगा. पैरेलल वेनेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट. सो ए इज फॉल्स, आर इज करेक्ट. Assertion. Alternate type of phyllotaxy are seen in China rose and mustard plant. So China rose और mustard plant में alternate phyllotaxy आपको मिलता है. नाउ नेक्स्ट असर्शन आपका ये था बेटा कि चाइना रोज और मस्टर्ड दोनों में अल्टरनेट फाइलोटैक्सी है. रीजन, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी इज द टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी व्हिच इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स in which single leaf arises at each node is the correct. तो alternate phyllotaxy का मतलब ये होता है कि each node produce only a single leaf. So it's a both A and R is true and R is the correct explanation of it. Now again assertion reason. In racemose type of inflorescence the main axis grow indefinitely. Correct है ये क्योंकि indefinitely ही grow करता है, वहाँ पे tip is not turned into a flower and main axis is not terminate by flower. So both are correct and also correct explanation. Now the statement based question. Leaf originated from shoot apical meristem and are arranged in a basipetal order. ये wrong statement है बेटा क्योंकि basipetal नहीं, आपका leaf acropetal order में arrange होता है. Now they are most important vegetative organ for photosynthesis. So it's a correct. So first statement is incorrect and second statement is correct. Now match the following: root cap, meristematic zone, elongation zone and maturation zone. And they are also find out in your text. Root cap, thimble like structure. So A का आएगा आपका 4, meristematic zone 3 because fast cell division बोल रहा है तो meristematic cell यहाँ पे present होंगे. Elongation zone lengthwise increase करेगा और maturation zone में root hairs होंगे. So your correct option with match the following is 4, 3, 1, 2. So second is the correct option. Now match the following type of question. Pedicel, peduncle, bracts and petiole. अभी इसको सॉल्व करने के लिए आपको सीधा सीधा जाना है पेडंकल, पिटियोल, पेडिसिल. पेडिसिल आपको फ्लावर में मिलता है और पिटियोल आपको कहाँ पे मिलेगा? लीफ में. तो पेडिसिल आपका कहाँ पर आएगा? पेडिसिल आएगा आपका स्टॉक ऑफ द फ्लावर. पेडंकल सीधा सीधा है इनफ्लोरेसेंस, या तो दूसरा ऑप्शन हो सकता था फ्लोरल एक्सिस. और फिर जो आपको दिखाई दे रहा है सी ब्रैक्ट, रिड्यूस लीफ है, सिंगल होता है, जहां पे आपका फ्लावर का ओरिजिन होता है वहां पे आपको ये ब्रैक्ट मिलता है. एंड पिटियोल इज नथिंग बट स्टॉक ऑफ लीफ. सो करेक्ट ऑप्शन इज 2, 4, 1, 3. मैच द फॉलोइंग. कोलियोराइजा, फूड स्टोरिंग टिश्यू, स्क्यूटेलम, single seeded fruit is developed from monocarpellary superior ovary and membranous seed coat. So coleorhiza is connect with the radicle, food storing tissue, easy to use, endosperm, and while first one scutellum is nothing but single cotyledons of the monocot. Seed developed from monocarpellary superior ovary, it's a mango because it's a drupe, and membranous seed coat present in a maize because it's a monocot. So correct option is second. Symbol match करने हैं. This is a symbol taken from a floral formula. First symbol, when this circle is divided into 4 equal quarter parts, so it is considered to be actinomorphic. This symbol is related with the zygomorphic symmetry. So first के लिए 2, second 1. K is the symbol used for calyx while C is the symbol used for corolla. So your correct option is 2, 1, 3, 4. The mature seed of the plant such as gram and peas possess no endosperm because as you know early stages में सारे के सारे आपके सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा. लेकिन अगर आप वो बोल रहे हैं मेच्योर सीड में तो उसका रीजन क्या है कि एंडोस्पर्म गेट यूज्ड अप बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो because your endosperm is nothing but food of your developing embryo. So correct option is only 4 कि it is consumed or used up.
नाउ फ्लावर ऑफ द जाइगोमॉर्फिक कंडीशन. जाइगोमॉर्फिक कंडीशन जो आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल में, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, गुलमोहर और केशिया, इन दोनों भी प्लांट में आपको जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री मिलेगी. बाकी फ्लावर में आपको जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री नहीं मिलने वाली है. सो दे आर आस्किंग ओनली जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री. सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट. The ovary of half inferior given in a perigynous condition, and the most common example of perigynous condition is plum. Another two example from your textbook is plum, peach, rose. So here only one is given, that is plum. So it is your correct answer. Which of the following is Burl phyllotaxy? So again, easy label of the question. Only one example given in your text, that is Alcitonia. So correct option is 3. Apical meristem is present at apical. The position is on the distal end. So apical meristem is present tip of the root as well as tip of the shoot. So first and second is the correct option. Lateral side of the root and shoot having cambium. So it is not correct. Axillary bud is totally different option. So your correct option is only third. Tip of the root and tip of the shoot. So apical meristem key location. We are saying that ram and sam. Root apical meristem and shoot apical meristem. Angiospermic xylem consists of. So this is a component of the xylem. कि xylem में कितने component मिलेंगे? Basils, tracheids, fiber, parenchyma. So P and Q is correct. R. Protoxylem and metaxylem is also correct. So 1, 2, 3, 4. P, Q, R, S. All 4 are correct. Sieve tube, companion cell and bast fiber. This is related with the phloem. So these are not connected with the xylem. So first 4 option is correct here. In pteridophyte and gymnosperm, xylem consists all except pteridophyte and gymnosperm both are no doubt vascular plant, but presence of basils is not observed in these plants. So your correct option is basils. Tracheid, basils and scleroid are similar in a way that all tracheid, basils and scleroid, they all are dead cells. तो जब ये काम करते हैं तो ये सारे के सारे dead हो जाते हैं. These are non-living cells which perform the specific function. Tracheid and basils are involved in a translocation, while your scleroid is nothing but sclerenchyma provide the mechanical support or body to the fruit pulp. Identify the given diagram. This diagram is nothing but a tracheid. So choose the correct option appropriately and signify the feature of this diagram. So this diagram is tracheid. So it is dead cells without protoplasm. This is not an interconnection. Cell wall, small cavity, थिन सेल वॉल नहीं होगा यहाँ पे. तो थर्ड ऑप्शन भी आपका रॉन्ग आता है. द मेन वाटर कंडक्टेंट और ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट इन एंजियोस्पर्म इज अगेन नॉन करेक्ट बिकॉज इट्स अ बेसिस. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ओनली वन, डेड सेल्स विदाउट प्रोटोप्लाज्म. द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी xylem is called, easy question, protoxylem, and later form primary xylem is called, this is metaxylem. So protoxylem and metaxylem given in your textbook in a root anatomy as well as stem anatomy. Select the incorrect pair. Xylem parenchyma, parenchyma है तो living होगा. Exarch condition is stem, it is incorrect option and आपको incorrect ही पूछा है. स्टेम में अगर आप डायग्राम टेक्स्ट बुक में देखोगे तो एंडार्च है बिकॉज प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स पिथ. सो स्टेम में एक्सार्च कंडीशन नहीं होगा. प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर इन स्टेम, करेक्ट है. प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरल इन ऑर्गन. सो ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट योर सेकंड. सो एक्सार्च कंडीशन नॉट ऑब्जर्व इन स्टेम. कंसीडर द गिवन बिलो टिश्यू सिस्टम, कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में एनाटॉमी का फर्स्ट पेज देखेंगे तो आपको ये लाइन मिल जाएगी. These are the grouped on the basis of structure and location in the plant body. फर्स्ट पेज पे ही आपको ये टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा बेटा. स्ट्रक्चर एंड लोकेशन जो प्लांट बॉडी के उसके ऊपर ही डिपेंड होता है, क्योंकि जो सबसे पेरिफेरल होता है वो एपिडर्मल बनाएगा और जो मेजर टिश्यू होगा वो ग्राउंड टिश्यू होगा और कंडक्टिंग टिश्यू इन नथिंग बट सेंट्रल सिलेंडर जो कि आपका कंडक्शन में इन्वॉल्व होगा. Choose the incorrect pair from the following option. Cuticle is absent in root, correct option है. Primary function of epidermis protection, correct option है. Present on epidermis stomata, epidermis पे stomata हो सकते हैं. Bean shaped subsidiary cell, ये option आपका incorrect है क्योंकि bean shapes और डम्बल शेप अगर आपको कोई पार्ट मिलता है स्टोमेटा में तो वो पार्ट आपका होगा कौन सा, गार्ड सेल्स. So it's a wrong option. Consider the given below characteristics.
They may be branch or unbranched, soft or steep. They are secretory in function, use usually multicellular and found in the shoot system, prevent water loss, help in absorbing water and mineral. बेटा ये सारे स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो ऑल द स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट लास्ट वन बिलोंग टू द वन पार्ट ऑफ द स्टेम हियर दैट इज ट्राइकोम्स. सो ट्राइकोम्स के लिए 4 करेक्ट है. लास्ट वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है बिकॉज लास्ट ऑप्शन रिलेटेड है रूट हेयर से. एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल आपके रूट हेयर्स करते हैं. सो योर करेक्ट ऑप्शन आर 4 विद रिस्पेक्ट टू ट्राइकोम्स. ग्राउंड टिश्यू डू नॉट इंक्लूड. ग्राउंड टिश्यू में क्या इंक्लूड नहीं है. तो आपके टेक्स्ट बुक में ग्राउंड टिश्यू की जो डेफिनेशन दी हुई है उन्होंने दी हुई है एक्सेप्ट इपिडर्मल एंड वेस्कुलर टिश्यू ऑल आर द पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू. तो इपिडर्मल हटा दीजिए, वेस्कुलर हटा दीजिए, ये सारा का सारा आपका ग्राउंड टिश्यू का पार्ट आएगा. रीजन इज दैट cortex, medullary rays and pericycle all are made up of the parenchyma cells. So this is considered to be a ground tissue system, not include these parts. So this is epidermis and vascular tissue. So your correct option is first and second. Given below are the locations of the cell in a plant: primary, stem, root, pith, medullary rays, cortex, pericycle. प्राइमरीली इन सारे पार्ट्स में अगर आपको कुछ चीज कॉमन मिलेगी तो सपोज करो आप पिथ ले रहे हो, मेड्यूलरी रेज ले रहे हो, कॉर्टेक्स ले रहे हो, पेरिसाइकिल, इसमें भी अगर आपको मिल जाएगा तो इन सब में मेजर आपको जो सेल्स मिलेंगे वो कौन से मिलने वाले हैं? पेरेन्काइमा. बिकॉज पेरेन्काइमा इज मोस्ट अबंडेंट टिश्यू ऑफ द प्लांट बॉडी. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज पेरेन्काइमा. Radial vascular bundle is a characteristically occurs in radial vascular bundle. This is not a characteristics of a stem, not a leaf, not a phalloderm. So it's a correct option. Radial vascular bundle present in a monocot as well as dicot root. हाँ, monocot में इसके जो नंबर होंगे वो होते हैं more than 6. So it is called polyarch. अगर डाइकॉट अगर आप रूट देख रहे हो तो डायआर्च टू हेक्सार्च, कोई भी कंडीशन हो सकती है. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड. In which type of vascular bundle arrangement is the cambium present? कैम्बियम सिर्फ आपको एक जगह मिल सकता है और वो है ओपन वैस्कुलर बंडल. तो ओपन वैस्कुलर बंडल विथ रेडियल अरेंजमेंट. ओपन वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट रेडियल नहीं होता है. क्लोज वैस्कुलर बंडल विथ रेडियल, अगेन रॉन्ग ऑप्शन. क्लोज वाले तो दोनों आप पहले ही डिलीट कर सकते हो. ओपन वैस्कुलर बंडल विथ रेडियल अरेंजमेंट, नो. ओपन वैस्कुलर बंडल अगर है तो आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम है वो है कंजॉइंट कोलेटरल ओपन. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड. Which of the following has the ability to form secondary phloem and xylem tissue? Secondary phloem and secondary xylem is formed due to the activity of vascular cambium, and this is present only in dicot stem. Identify the vascular bundle with respect to M and O and choose the correct option. M, as you know, this is a radial conjoint collateral close, and due to the presence of conjoint collateral open. So M is radial, conjoint collateral close and conjoint collateral open. So option is that. N is the xylem and phloem jointly present in a same radius. So this is your N. तो सही है ये. O, आपका phloem is located inside the xylem. M form the woody tissue and N is arrangement of the alternate in different radii. तो M आपका सही है. अल्टरनेट रेडियस पे आपको मिलने वाले हैं ये. तो आपसे उन्होंने पूछा क्या था कि फिगर को आइडेंटिफाई करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो करेक्ट ऑप्शन आपका सिर्फ एक ही दिख रहा है. xylem and phloem are jointly present along with the same radius. ये देखिए फिर से डायग्राम टेक्स्ट बुक का है, आप वापस टेक्स्ट बुक भी रिफर कर सकते हैं बेटा. चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. आउटर लेयर ऑफ द डाइकॉट epidermis करेक्ट है. cortex of the dicot root in parenchymatous tissue correct है. innermost cortical layer of the dicot root is called endodermis, ये भी सही ऑप्शन है. conjunctive tissue Casparian bands, ये आपका wrong ऑप्शन है because conjunctive tissue are present between the xylem and phloem and Casparian bands are formed within the endodermis of the root. So this is your answer. The conjunctive tissue is made up of. So थोड़ा सा connected question है. parenchymatous cell which lies between xylem and phloem. तो conjunctive tissue यही होगा, parenchyma होगा. sclerenchyma is not correct. Between xylem and phloem नहीं होता है, again incorrect. meristematic नहीं है.
So your correct option is first. Which of the following feature is incorrect regarding monocotyledon's root? Pith is large and well developed, given है, correct है. Secondary growth नहीं होगा, रीजन है कि वहां पे कैम्बियम रिंग नहीं बन पाएगी. सो सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट रूट में प्रेजेंट नहीं होने वाला है. नाउ choose the incorrect pair, consider the following dicot stem. Hypodermis provide mechanical support, correct है. Starch grain endodermis में present है. Pericycle present above the phloem in the form of semilunar patches as it is sentence given in your text. Vascular bundle is multi-layered and arranged with exarch protoxylem, right? तो स्टेम में आपका exarch नहीं है और उन्होंने क्या पूछा है, incorrect. तो first 3 correct है and fourth one option is incorrect. Now diagram from your text. The correct option, identify the label part A to E in the given diagram of a portion of TS of dicot stem. So correct option अगर आप मैच करेंगे तो A हमें दिख रहा है कॉलन काइमा, क्योंकि ऊपर की लेयर एपिडर्मिस, क्यूटिकल और ट्राइकोम्स है. इसके बाद B वाला जो नेक्स्ट आ रहा है उसके नीचे लेयर हाइपोडर्मिस के, दिस इज again parenchymatous layer. Now C is a cambium layer and a protoxylem is the D, and this is again parenchymatous cells represent the pith in your diagram. Consider the TS of dicot stem. Textual question है, so choose the correct option. तो यहाँ पे जो ये डाइकॉट स्टेम है, यहाँ पे जो लेबलिंग है A, तो A थोड़े अंदर की तरफ उन्होंने दिया है, तो A डेफिनेटली हमारा क्या होने वाला है, एपिडर्मिस के अंदर की लेयर हाइपोडर्मिस एंड फ्यू लेयर ऑफ द कॉलन काइमा इज देयर. B यहाँ पे एंडोडर्मिस है क्या, देखेंगे, नो. B यहाँ पे पिथ हो सकता है क्योंकि वो थोड़ा सा सेंटर में उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है, तो B तो आपका करेक्ट नहीं आएगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज A. Now given diagram, transverse section of the stem, as you know it's a monocot stem. और हाइपोडर्मिस के बारे में पूछ रहा है, तो मोनोकॉट की हाइपोडर्मिस आपको मिलती है स्क्लेरेनकाइमेटस. टेक्सुअल क्वेश्चन है, मेडुलरी रेज आर फॉर्म्ड बाय द, मेडुलरी रेज कैसे बनते हैं, रेडियली प्लेस पैरेन्काइमा सेल्स बिटवीन वेस्कुलर बंडल. अगर आप डाइकॉट स्टेम का डायग्राम देखोगे, ये अगर रिफर कर रहे हो, तो 2 वेस्कुलर बंडल के बीच में यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में मेडुलरी रेज उन्होंने लेबल किया हुआ है. तो मेडुलरी रेज आपकी रेडियली प्लेस होंगी और पैरेन्काइमेटस होंगी और बिटवीन 2 वेस्कुलर बंडल होंगी. लॉन्गिट्यूडनली नहीं होता है, लेटरली नहीं होगा, ओब्लिकली भी नहीं होगा. The central part of the dicot stem is occupied by the parenchymatous cells is called, easy option है pith. The vascular bundle is enclosed within a well-developed sclerenchyma sheath. It is present in a monocot stem because your vascular bundle is scattered. Dorsiventral leaf. When they ask the dorsiventral leaf, definitely it is dicot leaf. Generally bear more stomata than des epidermis. तो लीफ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा कौन सा, डॉर्सीवेंट्रल लीफ. डेस एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा, किस पे ज्यादा होंगे, तो एबैक्सल साइड पे, यानी कि लोअर एपिडर्मिस पे आपके स्टोमेटा ज्यादा होंगे एज कंपेरेटिव टू एडेक्सल साइड. चूज द करेक्ट ऑप्शन इन गिवन बिलो डायग्राम. तो ये जो डायग्राम है आपकी टेक्स्ट बुक का ही है, मोनोकॉट लीफ का है. तो ए आपका अपर एपिडर्मिस जा रहा है, सो एडेक्सल आएगा. बी जो उन्होंने बताया हुआ है, दिस इज कंसीडर्ड टू बी जाइलम. एंड सी, तो दिस इज अ मेसोफिल टिश्यू और फोटोसिंथेटिक टिश्यू ऑफ द लीफ. एंड while D is abaxal side and E is considered to be a phloem tissue present within. Now, the vascular bundle in the leaves of the dicot are surrounded by a layer of thick cell called. Vascular bundle या vascular system के बाहर जो भी लेयर होती है, हम उसे bundle sheath cells बुलाते हैं. Now, plant having a little or no secondary growth are, जिनके पास secondary growth नहीं होगी, फर्स्ट ऑप्शन वो दे रहे हैं कोनीफर्स. कोनीफर्स जिम्नोस्पर्म है, बूढ़ी आपके होते हैं और ये बनाते हैं आपका डेसिडियस एंजियोस्पर्म. डेसिडियस एंजियोस्पर्म भी डाइकॉट कैटेगरी में जाते हैं, ये भी सेकेंडरी ग्रोथ दिखाते हैं. ग्रास आपका मोनोकॉट है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखाएगा. साइकेडल्स अगेन जिम्नोस्पर्म है, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होता है. वो पूछ रहा है नो सेकेंडरी ग्रोथ, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ग्रास. असर्शन, डम्बल शेप गार्ड सेल्स आर फाउंड इन ग्रास, करेक्ट है, बिकॉज डम्बल शेप गार्ड सेल्स ग्रास में आपको मिल जाएंगे बिकॉज ग्रास इज अ मोनोकॉट. नाउ ईच stoma is composed of the 2 bean shaped cells known as guard cells in dicot. तो ये दोनों करेक्ट हैं बट स्टेटमेंट अलग अलग हैं, सो नॉट एक्सप्लेनेशन.
Now, root hairs are unicellular and trichomes are usually multicellular structure. Correct है आपका point. And the root epidermis contain root hairs while the stem epidermis contain trichomes. So ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं पर एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका सेकंड. Now, the endodermal cell of the root contain Casparian thickening on their radial and transitional wall as it is given है आपकी टेक्स्ट बुक में. करेक्ट स्टेटमेंट है. एंडोडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स. ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है क्योंकि एंडोडर्मिस आपका आउटर नहीं बल्कि इनर लेयर कंसीडर होता है. तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स. अगेन मैच द फॉलोइंग. डायकॉट स्टेम का फीचर लेना है हमें. हाइपोडर्मिस किसका बना हुआ है? सो योर हाइपोडर्मिस इज collenchyma, cortical cell parenchyma, and endodermis rich in starch. That's why this endodermis is called starch sheath. So your correct option is 1, 2, 3 respectively. Now match the following. Bean shaped guard cells आपको कहाँ मिलेंगे? तो करेक्ट ऑप्शन अगेन डाइकॉट स्टेम में मिलेंगे, डम्बल शेप मोनोकॉट में मिलेंगे, ट्राइकोम स्टेम में मिलेंगे और एक्सार्च कंडीशन आपको रूट में मिलेगी. सो योर कोड इज 1, 2, 3, 4 डायरेक्टली. Again match the following type of question. Open vascular bundle, radial vascular bundle, closed vascular bundle and conjoint vascular bundle. So radial तो आप सबसे इजीली मैच कर सकते हो कि रेडियल वेस्कुलर बंडल आपको कहाँ मिलेंगे. तो रेडियल वेस्कुलर बंडल आपको रूट में मिल जाएंगे. ओपन वेस्कुलर बंडल आपको किसी भी डाइकॉट प्लांट में मिल सकते हैं. और जो आपका सी है क्लोज वेस्कुलर बंडल, ये आपको कहाँ मिलेंगे? क्लोज वेस्कुलर बंडल आपको मिल सकते हैं किसी भी मोनोकॉट प्लांट में क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट होता है. और कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल आपको मिलते हैं डाइकॉट प्लांट में. नाउ कंजॉइंट एंड ओपन वेस्कुलर बंडल विल बी ऑब्जर्व इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कंजॉइंट एंड ओपन. ओपन दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज 4 डाइकॉट स्टेम. इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर फॉर्म ड्यू टू. बेटा ये आपको लग रहा होगा सेकेंडरी ग्रोथ का क्वेश्चन है, लेकिन प्लांट ग्रोथ में गिवन है. तो आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम ये दोनों भी पैरेन्काइमेटा सेल से डेवलप होते हैं. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ सेल डिफरेंशिएशन. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड. हाउ मेनी शूट अपिकल मेरिस्टेम आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन अ ट्विंग ऑफ अ प्लांट पॉजेस 4 ब्रांचेस एंड 26 लीफ. तो एक्चुअली में जो आपका मेरिस्टेम होगा वो सिर्फ टिप पे होगा, आपको लीफ को कंसीडर नहीं करना होता है. सो कितनी ब्रांचेस हैं? 4 और एक मेन टिप पे होगा. तो अगर आपकी 4 ब्रांचेस हैं और एक मेन टिप पे आपका प्रेजेंट है तो मुझे कुछ इस तरीके से काउंट करना होगा. 1, 2, 3, ये आपका 4, ये देखिए 4 ब्रांचेस और एक यहाँ पे आपका. तो अल्टीमेटली यहाँ पर मुझे कितने मिलने वाले हैं शूट अपिकल मेरिस्टेम? 5 मिलने वाले हैं यहाँ पे शूट अपिकल मेरिस्टेम. सो करेक्ट आंसर इज 5. Now, phloem of the gymnosperm lag. जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में क्या नहीं होगा? तो सीप ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल बोथ आर एब्सेंट. सीप ट्यूब की जगह लेता है सीप सेल्स और कॉम्पेनियन सेल्स की जगह पे आपको मिलने वाले हैं वहां पे एल्ब्यूमिनस सेल्स. सो लैग्स मतलब एब्सेंट पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका थर्ड. Epiblema of the root is equivalent to. Easy question. Epiblema is another word used for epidermis of the root. Stomata in ग्रास लीफ आर. सो सिंपल क्वेश्चन है. डम्बल शेप आपको मिलने वाले हैं ग्रास के लीफ में. कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. Casparian strips is present in a root endodermis because of the presence of the one wax-like chemical which is called suberin. Secondary xylem and phloem of the dicot stem are produced by. Secondary word जहां भी आएगा आपका आंसर आता है vascular cambium. और xylem और phloem बोल रहे हैं तो vascular tissue है, so it's a vascular cambium. Bulliform cells are present in. Bulliform cells is the characteristic feature of monocot. That's why your bulliform cells are present in isobilateral leaf, or another option is monocot leaf. So this is a key for your paper, and your question from morphology and anatomy is, I think, clear to you. This booster series is very helpful to clear your textbook, and all the statement based questions are covered in it. So thank you so much.